Python library functions. I think we have already covered these functions in class 11th. So we'll revise them because they are in class 12th also, and they definitely come in the exam. First of all, we'll start with string functions. String functions, as you know, it is a group of one or more characters, and this is a very common part of our programming because everywhere we use strings. Input, if you remember, when we use function input, you write a string, enter a number, like this, correct? So here strings are used whenever you want to store a name in a variable, then even this is a string. So string is a group of characters. One important thing about string is it is immutable. You cannot change the string. Whenever any changes are done in a string, a new string is formed. So existing strings cannot be modified. Fine. So you can read it. Nothing special or nothing which is not you know. Next. Now very simple, these are the library functions are very simple, so we'll go little fast. How to create a string to uppercase and to lowercase. There are two functions, string dot upper, string dot lower. This string is maybe your x variable. Suppose x is a variable having hello word. You want to convert hello to uppercase, so you will write x dot upper, correct? Same way x dot lower. Here you can see this is a string ss in which semi shark is present. So when you display ss dot upper, semi shark will display in the capital letters. Same way to display in small letters you use ss lower. Boolean methods, they are very much used in our programming because whenever you need to check whether the entered string is correct, is in lower case, upper cases, numeric, whenever we use these kind of functions, a lot of these functions are being used. So we'll come here directly. Is L numeric, alpha numeric, al for L, alpha num for numeric, okay, alpha numeric. So it will give you true or false if the string variable which contains a string, if it is containing okay, a1, it will give you true. Okay, if it does not contain both the characters alphabets and numerics, then it will give you false. Okay, same way is alpha, to check whether it contains only letters from a to z or not. Is lower, whether it is in lower case or not. Is numeric, whether it is from 0 to 9 or not. Very simple. Is space, if the string contains only spaces, then it will give you true, otherwise it false. Okay. Is title case is, suppose computer in word has only first letter as capital, so first letter of the word is called title case. If it is title, then it will give you true or false. Is upper, true or false. These functions are very important. Whenever in a exam you need to write a complete program of containing strings, then normally we use all these functions, maybe one or another functions, but normally we use them. So you need to learn these functions. Okay, next, this is also one example. Is numeric, is alphabetic. Yeah, these numbers, letters, these all are variables here. So don't be confused or this is a keyword. Wrong. These all are variables containing strings. Suppose now here you have stored 5 in double quotes, means here 5 has become a string. Okay, so 5 in double quotes and 5, अगर दोनों को compare करें तो this is a string, this is a number. Okay, I think this can done. This is same. Is lower, is upper. Example of upper. ये देखो इसका ऐसे करो. First you do these questions in your rough notebook and then compare whether the output is same as you have calculated or not. Okay, this will be your practice also. That's why I have given examples after every topic. Okay. Next, how to find out the string length. So in earlier questions we have always seen function is like string dot function.
Okay, all string functions come after dot. Name of the string, variable of the string, then dot, then function. But in case of string length, you will see that len is the only function and you pass string here. Okay, so this way you can little learn that कहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा, कहाँ ब्रैकेट के बाहर आएगा. Length is the only function here. Length and the string you pass in it, it will give you the size of the string. Now next is joint, split, replace. These are the functions to make changes in a string, not in the same string. It will give you updated string. Okay, one string to other. Okay, join means inserting one string into another. Okay, I give you an example. Suppose here balloon is a variable. It has a sentence, Sammy has a balloon. Okay, Sammy has a balloon. I want to insert one space after each character, so I'll use join. स्पेस डॉट जॉइन बलून, यानी बलून में जितने भी करेक्टर्स हैं सबके बीच में एक स्पेस डाल दो एंड यू सी द आउटपुट एस स्पेस ए स्पेस एम स्पेस. ओके, सो जॉइन मीन्स टू जॉइन string 1 to every character of string 2. Okay, so in the same case if you want to reverse, अगर आप यही काम रिवर्स करना चाहते हो तो you can use reversed. यहाँ पे स्पेस नहीं है, नो स्पेस इज देयर. ओके, सो ये इसने कुछ हमने ज्वाइन नहीं किया तो उसने इसी स्ट्रिंग को स्पेस कर दिया without inserting any spaces because here no space, this is a blank characters. ठीक है, I have written little boldly also here. Please take care of. ध्यान से पढ़ो. अगर आप मैं ना भी समझाऊँ और आप ध्यान से पढ़ोगे you will get to know what is there in this video. Okay, so comma, if you want to join with the comma, and this is a sequence में अगर आपने join करना है तो क्या होगा देखो. अदरवाइज sequence में sharks, crustaceans, plankton है, इसमें comma comma करके एक string बन जाएगी after joining. Okay. Okay, next. Okay, next we have now come here split. Split तुमने याद भी होगा, मैं 11th में भी किया था. Split is to divide a string into different parts. यहाँ पे मैंने लिखा है A. Split करो, बैलून में जो भी प्रेजेंट है करेक्टर्स उनको A से स्प्लिट कर दो. सी एस कॉमा सैमी था ना, एस कॉमा ए से स्प्लिट कर दिया. सो ए विल बी रिमूव्ड, एस कॉमा एम एम वाई ए एच एस बी. सो देखो स्प्लिट से क्या होगा, ए से स्प्लिट कर दिया. अगर आप स्प्लिट में कुछ नहीं पास करते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, स्पेस से स्प्लिट करता है उसको. ठीक है, सो अगर मैंने जैसे लिखा, ओके, इफ़ आई राइट हेलो वर्ल्ड इज़ अ स्ट्रिंग एंड आई हैव यूज स्प्लिट हेयर. ठीक है, तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगी, हेलो वर्ल्ड. ओके, देयर विल बी 2 strings हेलो वर्ल्ड, ये स्पेसेस हो गए. replace is same updated string with some replacement, like balloon if has word that will be replaced with had and you will get a string instead of had will appear. Okay, so these were string functions. More you will practice, more you will read, more you will learn. So learn at least 2 to 3 times हर function की practice करो, then you will get to learn this. ठीक है, they will retain in your mind. Now we'll come to mathematical function. It is again a very simple topic. मुझसे ज़्यादा तुम्हें आते होंगे जिनको मैथ्स आता होगा. तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं वो बता देती हूँ. जैसे सील एग्जाम में आ जाता है, सील कौन सी लाइब्रेरी में है, तो इट इज़ इन मैथ लाइब्रेरी. यू नीड टू इम्पोर्ट द लाइब्रेरी. तो हम जब कोड लिखते हैं उसके आगे हम लिखते हैं इम्पोर्ट मैथ, means math library will be imported and you can use all the mathematical functions in your coding now. seal क्या करता है, it gives you smallest integer greater or equal to x. x जो भी पास किया उसका
उसके पास जो होगा नंबर वो आ जाएगा. Fabs means absolute value. Factorial you know. Floor means return the floor value, lowest value. Okay. Largest integer less or equal to number. F sum is sum element. GCD greatest common divisor. इनको देख के पता चल रहा है जैसे is finite whether the number is finite or not, infinity whether the x is infinity or not. नॉर्मली इसमें सिर्फ हमारा ये यूज़ होता है और सी यूज़ होता है, 1 2. ठीक है. और इज एन ए यू कैन यूज़. सपोज यूजर से आपने कुछ इनपुट करवाया, आपने चेक करना है कि वो नंबर है या नहीं, तो यू कैन यूज़ दिस फंक्शन इज एन ए एन, नॉट अ नंबर, कि क्या एक्स नंबर है या नहीं. ओके. सो ये 2-3 फंक्शंस यूज़ होते हैं. रिमाइंडर यू कैन टेल क्या करता है रिमाइंडर, एक्स को वाई से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपको रिटर्न कर देगा. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. इसको भी आप सॉल्व करो, उसके बाद देखो आउटपुट आपकी जो नीचे लिखी हुई है वो आ रही है कि नहीं. सो दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस. नो नीड टू लर्न फंक्शंस विद ऑरेंज कलर्स. अभी आगे जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं ऑरेंज कलर, बस एक नज़र लगा मार लेना कि हाँ ये फंक्शंस ओके, दिस वाज फंक्शन इन द मैथ लाइब्रेरी, दैट्स इट. पावर तुम्हें पता क्या करती है, स्क्वायर रूट तुम्हें पता क्या करता है. ओके. दीज आर द फंक्शन. साइन कई बार एग्जाम में आ जाता है. ओके. टैन फंक्शन है, ये कौन सी लाइब्रेरी में है, यू कैन टेल मैथ. डिग्रीज कौन सी लाइब्रेरी में है, तुम कहोगे मैथ. तुम्हें कोई नहीं इसका पता करना कि ये क्या करता है. बट दिस ऑरेंज फंक्शंस डू, तुमने कुछ नहीं लेना देना. तुम्हें जस्ट यू शुड नो दैट दीज फंक्शंस आर देयर इन मैथ लाइब्रेरी. ओके. सो दैट वाज द concept of library functions. Do it and practice.